solution. Gases are generally miscible in water and in other solvent to a limited extent. Ammonia, HCl, carbon dioxide are highly miscible in water, but hydrogen, oxygen, nitrogen are partially miscible. The solubility of oxygen in water is sufficient for the survival of aquatic animals. तो हम देखने वाले हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन. गैसेस जनरली देखते हैं क्या कि वाटर में ये मिसिबल होते हैं और दूसरे सॉल्वेंट में भी कुछ एक्सटेंट तक मिसिबल होते हैं. और अमोनिया हो गया, HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब लिटिल सॉल्युबल होते हैं. लेकिन ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, दैट इज सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. सो लेट्स पुट हेडिंग गैस लिक्विड सॉल्यूशन. Gases are generally miscible in water and to limited extent other solvent too. Ammonia, HCl, CO2 are highly soluble in water, but H2, O2, N2 are partially soluble in water. The solubility of O2 in water is sufficient for the survival of aquatic animals. Now see, solubility of gas in liquid depends on following factors. And first factor will be nature of gas and liquid. We see easily liquefiable gas are more soluble in water. जो आसानी से गैस लिक्विफाई हो रहे हैं वो इजीली मिसिबल होते हैं वाटर में. और हम देखते हैं क्या कि ऐसा गैस जो इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली आयंस में टूट जाता है, तो वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल होते हैं. तो हम लिखेंगे easily
liquefiable gases are more soluble in water. Those gases which easily dissociates into ions are highly soluble in वाटर। तो हम देखने वाले हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि HCl गैस है और जब हम इसे वाटर में घुलाते हैं तो ये H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस ये फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कर रहा है उसमें हम देखने वाले हैं टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर विल बी टेम्परेचर। As we know, Le-Chatelier principle indicates that if the dissolution is exothermic, when we mixes gas in liquid, this is an exothermic dissolution, and if we increase the temperature, their solubility will decrease. हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे गैस लिक्विड के सरफेस को छोड़कर इन्वायरमेंट में मिक्स कर जाता है। तो हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का इन लिक्विड वो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घट जाता है। तो हम लिखेंगे बेस्ड ऑन ली-चैटेलियर प्रिंसिपल the dissolution of gas in liquid is exothermic. It means change in enthalpy is less than 0, that means negative. Therefore, with the increase in temperature, solubility of gas in liquid decreases. And the next factor will be pressure. Very important factor because it is governed by Henry's law. Next factor will be pressure. Here you may write at high temperature gases
escape from the surface of liquid and rises up and mix in environment. Now pressure. With the increase in pressure, solubility of gas in liquid increases, and it is governed by Henry's law. 1802, Henry provides relationship between solubility of gas in liquid and applied pressure. तो हम देखने वाले हैं कि हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरी लॉ। और हेनरी ने बताया कि गैस का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वह इंक्रीज होता है। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility. The solubility of gas is directly proportional to the applied pressure. Now the statement will be the solubility of gas in liquid is directly proportional to the applied pressure. Mathematically, we see solubility is directly proportional to applied pressure, and जब हम इसे इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे KH। यहाँ देखेंगे वेयर S indicates the solubility of gas in liquid, P indicates applied pressure, and KH will be Henry's constant. Now another statement, another common statement of Henry's law, the solubility of gas in liquid is compared to the mole fraction. So we see the next another statement of Henry's law,
is the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction. Another common statement. Partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction. In liquid we can write, and we see here P is directly proportional to X, and P is equal to KHX. Now we see the graph between partial pressure and mole fraction. P indicates the partial vapor pressure and X will be the mole fraction. The graph will be a straight line, where X is equal to mole fraction of gas and P will be partial pressure. Now we see the limitation of Henry law. Henry law सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता है. तो Henry law is applicable only when the pressure of gas is not too high and the temperature is not too low, and the gas should not undergo any chemical change and no association and dissociation in the solution may take place. कहने का मतलब कि हेनरीज लॉ कुछ लिमिटेशन को फॉलो करता है. अगर हम प्रेशर को बहुत अधिक बढ़ा दें, टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा. गैस को हम लिक्विड में मिला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें केमिकल चेंज नहीं हो जाए और ना ही कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन उस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में ऑब्जर्व हो, तभी हम देखेंगे कि हेनरी लॉ फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो अब हम देखने जा रहे हैं लिमिटेशन. Limitation of Henry's law. First limitation, or we can write Henry's law is applicable only when first the pressure of gas in liquid is not too high and the temperature is not too low. Second will be it should not undergo any chemical change.
chemical changes. Third, the dissolution should not undergo any association and dissociation. And next topic will be application of Henry's law. हेनरीज लॉ का वाइड एप्लीकेशन है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, उसके सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉटल को सील किया जाता है हाई प्रेशर में। साथ ही हम देखते हैं स्कूबा डाइवर, गोताखोर जो समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर में वो एयर के साथ हीलियम मिक्स करके जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है समुद्र में, वह क्या हो जाता है कि वह ब्लड में अपने टॉक्सिक इफेक्ट को डालने लगता है। दैट मीन्स उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के कारण वह हमारे ब्लड में इन करने लगता है और अपने टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाने लगता है, जिसको हम कॉमन टर्म में बेंट कहते हैं। इस कंडीशन को हम बेंट कहते हैं। तो इसलिए स्कूबा डाइवर एयर में हीलियम को मिक्स करके ले जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि हायर एल्टीट्यूड पे जो क्लाइंबर्स और माउंटेनर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है, और जिसके कारण कि पर्सन अनेबल टू थिंक क्लियरली, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और पर्सन वीक फील करने लगता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हायर एल्टीट्यूड पे क्लाइंबर सब ले जाते हैं। तो ये मुख्य एप्लीकेशन है, जिसमें हम पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle should be sealed at high pressure. Second, to avoid the toxic effect of nitrogen in blood, scuba diver carry O2 cylinder air mixes with helium. The condition is commonly called or commonly known as bent. Here nitrogen 56.7%,
helium 11.2% and oxygen will be 32.1%. Now, the third application will be at higher altitude climbers carry O2 cylinder, because at high altitude O2 concentration is very low and person unable to think properly and feel very weak. This condition is known as anoxia.